Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss a new topic which is government contract. Now, what is government contract and in it which sections lays down so that you can just score the marks? So, this is not just a big topic, we will cover it within only two videos. Now, government contract means what? Now, in first of all, in the government contract, we have to include the topic of the contractual liability and also the quasi contractual liability too. Okay. Now, constitutional provisions. Constitutional provisions means which protects our contract. Okay. Now, let's start. The contractual liability of a Union of India and state is recognized by Constitution itself. First of all, guys, contractual liability means a person who is liable to contract. Okay, ऐसा व्यक्ति जो लायबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो केपेबल है. ओके, who is competent, we can say it as. Now, the contractual liability of a Union of India and the state is recognized by Constitution itself. It says that the Union of India and state has recognized Constitution itself. Okay, the contractual liability Union of India और state की recognized किससे होती? Constitution itself से. Now, Article 298 expressly means in written, लिखाई में, provides that the executive power of union and of each state shall extend to carry on any trade or business and the acquisition, holding and disposal of property and making of contracts for any purpose. अभी आर्टिकल 298 में क्या बताया हुआ है? एग्जीक्यूटिव जो पावर है यूनियन की, ईच स्टेट की, वो अपने को राइट देता कोई भी ट्रेड करने का, कोई भी बिजनेस करने का, और एक्विजिशन है, अपन कोई भी ट्रेड को बिजनेस को अप्लाई कर सकते, वर्क कर सकते. ओके, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन सेज हियर. ओके, विच प्रोटेक्ट्स आर ट्रेडिंग थिंग्स in this article 298. This is the first constitutional provisions which articles 298 gives us. Okay, now for the 10 marks this government contract will become an exam for surely. Okay, now for the government contract we have some requirements which need to be fulfilled, otherwise this contract cannot be enforced. Okay, now what are these requirements we will see here as given below. Now, Article 299 subclause 1 prescribes the mode or manner of the execution of such contract. अभी जो आर्टिकल 299 है सब क्लॉज 1 का, ये क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है? मोड और मैनर एग्जीक्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट को. हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसा एग्जीक्यूट करेंगे ये आर्टिकल 299 सब क्लॉज 1 में बताया है. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड अंडर आर्टिकल 299 सब क्लॉज 1 मस्ट बी इन राइटिंग. इट सेज दैट द आर्टिकल सेज the contract is valid if only when it's in written. ये कॉन्ट्रैक्ट जब वैलिड होगा तब वो राइटिंग में दिया है. अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट ऑफ राइटिंग इट विल बी ओरल, then it is not accepted. Now, second requirement says that the second requirement is that such a contract can be entered into behalf of the government by a person authorized for that purpose by the president or the governor as the case may be. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या बताता है? ये एंटर्ड कब किसके बिहाफ पे होने को ना? गवर्नमेंट की, ओनली गवर्नमेंट. ओके, और ऑथराइज पर्सन के जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पर्पस के लिए यूज़ हुआ है. If it is signed by an officer who is not authorized by the president or the governor, the said contract is not binding on the government and cannot be enforced against it. अभी इसमें कहा गया है कि अगर से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऑफिसर से साइन किया गया है जो कि अनऑथराइज्ड है,
जो कि नॉट ऑथराइज्ड है। क्या है? नॉट ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। मतलब अगर से अपने को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, सबसे मेन चीज़ क्या याद रखना है? ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए वो। सेकंड, इट शुड बी बाय ऑथराइज्ड पर्सन बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। ओके, ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट अपना बाइंडिंग होगा, नहीं तो नॉट बाइंडिंग रहेगा वो और नॉट एनफोर्स्ड रहेगा। अब यहाँ एक केस लॉ दिया है which is important, by the way. We have to mention it case laws in this topic. Okay, Union of India versus NK Limited. अभी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एनके लिमिटेड में क्या बताया, ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन यू बाय अपरली। ओके, इसमें बताया है कि जो ऑथराइज पर्सन एंटर करने को होना, जो कि डायरेक्टर एंटर करने को होना, क्या कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर करने को होना? ऑथराइज पर्सन बाय प्रेसिडेंट, जो कि इसमें डायरेक्टर है। पर वो किसके बिहाफ पर वो कौन एंटर करता है बाद में? सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड इनटू बाय एन ऑफिसर हु इज़ नॉट ऑथराइज। ऑथराइज कौन था इसमें? डायरेक्टर ऑथराइज था। कौन था? डायरेक्टर ऑथराइज। बट it was entered later by Secretary of Railway Board. So the Supreme Court held what? Supreme Court held that officer is not authorized, इसलिए इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? नॉट वैलिड। नॉट वैलिड। ओके, मतलब इसका मेन बेसिक पर्पस क्या है? फर्स्टली, इट इज़ शुड बी इन राइटिंग। सेकेंड, इट शुड बी एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड बाय ऑथराइज पर्सन बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। अगर से ये कंडीशंस फुलफिल्स नहीं होती है तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और वैलिड भी नहीं होगा। ओके, now the last requirement we will discuss here. The last requirement is that the such a contract must be expressed in the name of president or the governor. Last requirement क्या दिया है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड में होना। एक्सप्रेस मीन्स इन रिटर्न होना और किसके नेम पे होना? प्रेसिडेंट के या तो गवर्नर के, एज द केस में बी। ओके, thus even though such a contract is made by an officer authorized by government in this behalf, it is still not enforceable against government if it is not expressed to be made on the behalf of president or the governor. Now in this line we can it says that it only mainly focuses on that the contract must be on the behalf of president and governor. Okay, it should be on the behalf of president, otherwise it will be not valid and it will not create an enforced into court. Okay, now this is our last requirement. In this we have to write all three requirements which I have told you. Now for this last requirement, in next video we will discuss the case law.